पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा 110 लॉज हैं, यहाँ से वहाँ तक लिस्ट जाती है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। सो उसको जब हमने देखा तो हमें पता चला कि ये सारे लॉज हैं, लेकिन बहुत से लॉज के रूल्स ही नहीं हैं, नोटिफिकेशंस ही नहीं हैं, बहुत से लॉज के बारे में पता ही नहीं है। और इनमें से जो ख़ास कर जो लॉज जिन पे काम नहीं हुआ या जिनकी वो 18 ईयर्स हम कह रहे हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, उसमें चाइल्ड मैरिज सर फहरिस्त है। I decided 2.5 years to put in a bill, a constitutional amendment for Article 11 to claim the majority age as 18. Pakistan Penal Code, which don't have any definition of the child in the Pakistan Penal Code. There is a definition of man, there is a definition of woman, but unfortunately we don't have a definition of a child. And here I can see my colleagues from transgender community. अगर बलूगत से मुराद किसी को हामला करना या किसी का हामला होना है, तो क्या हम ये चाहते हैं कि 10 साल की बच्ची अपने भाई से हामला हो जाए या 10 साल का लड़का अपनी बहन को हामला कर दे? क्या हम इस कानूनी तहफ़्फ़ुज़ इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, ये जाने बगैर कि हामला होने या करने से बच्चों के जिस्म पर किस कदर तबाहकुन असरात मुरतब होते हैं? In terms of marriage, girls are allowed by law to marry at 16 and boys at 18. That's not equal protection of the law. As you know from the Universal Declaration of Human Rights, all people should be equally protected by law. If you look at our laws, there is no set age. A lot has been talked about the Child Marriage Restraint Act, and there is a clear discrimination between the age of boys and girls who are allowed to get married.